Hello students, we will continue our previous topic, pair of straight line. Okay, in the previous lecture we have started the topic, pair of straight lines. Now see in the exercise 4.1 sub question 2, what is the question? Find the separate equations of the following lines. Okay, we have to find two separate equations. First question is 3y square plus 7xy equal to 0. 3y square plus 7xy equal to 0. दोनों में क्या कॉमन आएगा? टेक y कॉमन. y कॉमन लिया तो क्या आएगा ब्रैकेट में? y in bracket 3y plus 7x. From this we can write the two separate equations. The separate equations are first equation y equal to 0 and second equation 3y plus 7x equal to 0. We will get the two separate equations of lines. Now see the second one. 5x square minus 9y square equal to 0. Question is same. क्या क्वेश्चन है? Find the separate equations of the lines. Okay, now this is in the form of a square minus b square. So this 5x square we can write root 5x the whole square and 9y square we can write 3y the whole square. Factors of a square minus b square. What are the factors of a square minus b square? A minus b, a plus b. Here a equal to root 5x, b equal to 3y. So its factors are root 5x minus 3y, and in the second bracket root 5x plus 3y. Now we will get the two separate equations. The separate equations are first equation root 5x minus 3y equal to 0 and second equation is root 5x plus 3y equal to 0. Is that it? Now we'll take one more now. Third one. 3x square minus 10xy minus 8y square equal to 0. 3x square minus 10xy minus 8y square equal to 0. Okay, so as like a quadratic equation. 3 into minus 8 minus 24 x square y square. Factors of minus 24. Okay, choose the two numbers such that whose multiplication is minus 24 and subtraction of those numbers is minus 10. So this becomes 12 twos are, so this is 12 and 2. Middle side this is minus 2 plus 2. Minus 12xy plus 2xy. Split the middle term. 3x square minus 12xy plus 2xy minus 8y square equal to 0. First two terms में क्या कॉमन आएगा? 3 और 12 में 3 x square और x में x, तो 3x कॉमन. ब्रैकेट में क्या रहेगा? x minus 3 4 are 12 x minus 4y. इन दोनों 2 और 8 में प्लस 2 y square और y में y कॉमन. 2y कॉमन. ब्रैकेट में रहेगा x 2 4 are 8 x minus 4y. Common factor x minus 4y, another factor 3x plus 2y equal to 0. Okay, write down the separate equations. The separate equations are first equation x minus 4y equal to 0 and another equation is 3x plus 2y equal to 0.
These are the two separate equations of lines. Okay, is that it? Okay, now we'll take the next one. Okay, next type. Find the combined equation of pair of lines. Next question. Find the combined equation of pair of lines. Passing through the origin and perpendicular to the lines represented by following equations. Okay, this is the third question, 4.13. Sub question is 1. Okay, find the combined equation of a pair of lines passing through the origin and perpendicular to the lines represented by a following equation. The first question is 5x square minus 8xy plus 3y square equal to 0. Now factorize first. 5 into 3, 15x square y square. Okay. Factors of this, middle term is minus 3, minus 8. So its factors are 5 and 3. Middle term is minus 5, minus 5xy, minus 3xy. First find the separate equations. Split the middle term. 5x square minus 5xy minus 3xy plus 3y square equal to 0. फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन आएगा? 5x कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? x माइनस y. नेक्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन आएगा? माइनस 3y, ब्रैकेट में आएगा x माइनस y. कॉमन फैक्टर x minus y, another factor 5x minus 3y. Isn't it? Write down the separate equations. The separate equations are, what are the separate equations? First equation x minus y equal to 0, and second equation is 5x minus 3y equal to 0. We will get the separate equations. We have to find the combined equation. Okay, from the separate equations, write down the slope. What is the slope of this line? Minus 1 upon minus 1. So it is plus 1. Now slope of this line, minus 5 upon minus 3. So it is 5 upon 3. Okay, the required lines are perpendicular and which passing through the origin. Now write down the slopes of perpendicular lines. The slopes of perpendicular lines are, perpendicular lines का स्लोप कैसे लिखते हैं? Write down the negative reciprocal. तो इसका स्लोप आएगा m1 is -1 और इसका स्लोप आएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज करो, साइन चेंज करो, ये आएगा -3 upon 5. Since required line passing through origin, since required line passing through origin, then use slope origin form. क्या है slope origin form? By slope origin form. Slope point form is क्या? Point ratio origin. Otherwise we use directly slope origin form. What is slope origin form? Y equal to mx. तो पहला स्लोप लीजिए -1, तो इक्वेशन आएगा y equal to -1 into x. दूसरा इक्वेशन आएगा y equal to -3 upon 5 into x. So this is y equal to -x. So this equation becomes
x plus y equal to 0. Cross multiplication कीजिए 5y equal to minus 3x. So this equation becomes 3x plus 5y equal to 0. We have to find the combined equation. Combined equation find करने के लिए क्या करते हैं? दोनों का लेते हैं प्रोडक्ट. The required combined equation is दोनों का प्रोडक्ट लीजिए x plus y into 3x plus 5y equal to 0. दोनों का प्रोडक्ट लीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए. x into 3x 3x square, x into 5 5xy, y into 3x 3xy, y into 5y 5y square equal to 0. तो ये इक्वेशन है 3x square 5xy plus 3xy 8xy plus 5y square equal to 0. Okay, is required equation. Isn't it? Okay, ऐसा एक सिमिलर सम लेते हैं जो इजी होगा. Once again, you can find the procedure of this. Homogeneous equation of second degree is given. From the given homogeneous equation, find the two separate equations of lines. From the lines, write down the slope. Then write down the slopes of perpendicular lines. And lines passing to the origin use slope origin form. Slope origin form is y equal to mx. दो लाइन्स मिलेंगे, दोनों का लास्ट में मिला है आपको प्रोडक्ट. ओके, the second sum question is saying find the combined equation of pair of lines passing through the origin and perpendicular to the lines. Similar sum है, same procedure है. तो इक्वेशन होगा 2x square minus 3xy minus 9y square equal to 0. Okay, 2x square minus 3xy minus 9y square equal to 0. 2 into minus 9, 18x square y square. The factors. We know that 6 3s are 18. So 6 3s are 18. Middle sign is minus. So minus 6 plus 3. Minus 6xy plus 3xy. Split the middle term. So this is 2x square minus 6xy plus 3xy minus 9y square equal to 0. Procedure बिल्कुल सेम है as like previous था. फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन आएगा? 2x square और 6xy में 2 और 6 में 2 कॉमन, x square और x में x कॉमन. तो ब्रैकेट में रहेगा x minus 2 3 are 6, x minus 3y. लास्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन आएगा? 3 और 9 में 3 कॉमन, y और y स्क्वायर में y कॉमन. तो ब्रैकेट में रहेगा x minus 3y. नाउ कॉमन फैक्टर, कौन सा कॉमन फैक्टर है? x minus 3y. अनदर फैक्टर 2x plus 3y. From this we can write the separate equations. Can be separate equations? The separate equations are first equation x minus 3y equal to 0 and second equation आएगा 2x plus 3y equal to 0. Okay, separate equations मिलने के बाद आपको लिखना है slopes. फर्स्ट लाइन का स्लोप, स्लोप्स कैसे लिखते हैं? हाउ कैन राइट द स्लोप ऑफ गिवन लाइन? माइनस x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट. इट इज -1 अपॉन -3, देयरफॉर इट इज 1 अपॉन 3. इस लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन -2 अपॉन 3. एक गिवन लाइन के स्लोप्स. Then we have to write the slopes of perpendicular lines. The slopes of perpendicular lines are perpendicular
lines are. Okay, first line का slope m1 is. How you can write the slopes of perpendicular lines? Simply take negative reciprocal. Negative reciprocal means numerator denominator change करो और साइन चेंज करो. 1/3 का क्या होगा? -3. -2/3 का क्या होगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज. 3/2 माइनस का होगा प्लस. ओके, सिंस line passing through origin, इसका मतलब पॉइंट है origin. Okay, now use slope origin form. By slope origin form. By slope origin form. By slope origin form. क्या है स्लोप ओरिजिन फॉर्म? y इक्वल टू mx. y इक्वल टू mx. ओके, दोनों लाइंस के इक्वेशन मिलेंगे. लास्ट में आपको लेना है प्रोडक्ट. ओके, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? पहला स्लोप -3. m की जगह पे स्लोप पुट करो. तो पहला इक्वेशन आएगा y इक्वल टू -3 इंटू x. दूसरा इक्वेशन क्या आएगा? y इक्वल टू 3/2 स्लोप इंटू x. तो ये इक्वेशन हुआ y इक्वल टू -3x. फ्रॉम दिस वी कैन राइट 3x प्लस y इक्वल टू 0. फ्रॉम दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए. 2y इक्वल टू 3x. इस टर्म को राइट साइड में शिफ्ट कीजिए. तो ये इक्वेशन होगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 0. लास्ट में लीजिए दोनों का प्रोडक्ट. यू विल गेट द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन. द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन इज product 3x plus y into 3x minus 2y equal to 0. दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3x into 3x 9x square, 3x into minus 2y 3 into minus 6xy, y into 3x plus 3xy, y into minus 2y minus 2y square equal to 0. So required equation is 9x square minus 6xy plus 3xy. एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन कीजिए. तो ये आएगा minus 3xy minus 2y square equal to 0. Is required combined equation. Is required combined equation. You understand? Isn't it? Any problem? Okay. Next one we will see in the next video. Okay.